बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इमरान खान साहब के कुछ वकला, उनके कुछ आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करार देने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब और उनके दो साथियों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये मामला कितना सीरियस है, और आप जानते हैं कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब जो हैं, उन्होंने गवर्नर के हुक्म के बावजूद एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि 11 जनवरी तक परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ भी बैकआउट कर रही है। तो इन मामलात पर आइन और कानून क्या कहता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मुल्क के एक मारूफ आइनी माहिर जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनसे बात करेंगे। और जैसा कि इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है, तो इसमें शक की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल है क्या, हमारा इकनॉमिक फ्यूचर कैसा है, तो इस पे हमें बात करनी चाहिए। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के साथ नहीं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के साथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत ही अहम मगरबी सफारतकार के साथ, जो हमें बताएंगे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंसाफ लॉयर्स फोरम के सदर इमरान खान साहब के वकील जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आपको पता चल गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तो ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है, इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको एक और मरतबा नाअहल भी करार दिया जा सकता है? जी देखें, जहाँ तक तो ये कंटेम्प्ट वाले तौहीन ईसीपी के जो केसेस हैं जी, ये चैलेंज किया गया है इनको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी अपनी तौहीन का जो कानून है वो उनका गैर आइनी है, वो उनको ऐसा कोई हक ही नहीं है कि वो अपनी कंटेम्प्ट के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें। तो पहले तो फैसला उन केसेस का होना है, हाई कोर्ट के केसेस का, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इन द मीन टाइम, जब तक वो फैसला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई मजीद कार्रवाई मेरी नज़र में नहीं कर सकता। अच्छा। जब फैसला हो जाता है हाई कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट ने कहा कि इख्तियार ही नहीं है कंटेम्प्ट का, तो मामला वहां ख़त्म हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई आगे कर सकती है। वो जो इलेक्शन लॉज की एक शिक के हवाले से कहा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो स्टेटस है वो हाई कोर्ट जैसा स्टेटस है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा सा कानून है, लेकिन जो एक आसान अल्फाज में कानून ये कहता है कि कंटेम्प्ट की ताकत सिर्फ एक अदालत को दी जा सकती है। अच्छा। यानी कोर्ट ऑफ लॉ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये वाजे किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं, ये एक अथॉरिटी है, एक आइनी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अदालत चूंकि नहीं, इसलिए इसको कंटेम्प्ट की ताकत देना गैर आइनी है। ये एक कानूनी नुक्ता है जिसका फैसला पहले करना है अदालत उज़्मा ने। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब पे तोशा खाना का केस भी है, उनके खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस भी है, और भी उन पर बहुत से मुकदमात हैं। आपको लगता है कि किसी मुकदमे में उनको सज़ा मिलने, उनकी गिरफ्तारी या उनकी नाअहली का ख़तरा है? जी देखें, इस वक्त जो मुझे इत्ला है, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई 50 से ज़्यादा मुकदमे दायर कर दिए गए हैं मुख्तलिफ नौयत के। कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ सिविल केसेस हैं, कोई फंडिंग का केस है, कोई तोशा खाना का केस है। और ये मैं इसका जो जायज़ा लेता हूँ, इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूँ, मेरी नज़र में जो सियासी मुश्किलात हैं, सियासी मामले हैं, PDM की जो जमातें हैं, उनको जो नज़र आ रहा है वो उसको हल नहीं कर सकते। उनको नज़र आ रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और अगर इंतखाबात होते हैं तो वो यकीनी तौर पे इंतखाबात में उनको जीत होगी। उसको हल करने के लिए उन्होंने कानूनी रास्ता, बल्कि गैर कानूनी रास्ता अपनाया है, और बहुत सारे केसेस फाइल किए हैं, इस उम्मीद से कि किसी ना किसी केस में
वो इमरान खान साहब को या तो अरेस्ट कर लें या उनको नाअहल करार दे दें, ताकि वो खान साहब जो हैं इलेक्शन की रेस से बाहर निकल जाएं। जो सीरियस केसेस हैं, जिसको मैं समझता हूं कि सीरियस केस हैं, जिसमें ऐसी चीज़ हो सकती है, वो आपने उनका जिक्र किया। तोशाखाना वाले केसेस हैं, फंडिंग के केसेस हैं। वो केसेस को अगर आप जायज़ा लें उनका, मसलन तोशाखाना की बात करते हैं, तोशाखाना का केस मैं खुद कर रहा हूँ, और तोशाखाना का केस मेरी नज़र में एक अजीबो गरीब बेबुनियाद सा केस है। अगर तो ये केस ये होता तोशाखाना का कि इमरान खान साहब ने कोई घड़ी या कोई ज्वेलरी जो है तोशाखाना से चुराई है, या पैसे दिए बगैर लिया है, या उनको इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर तो एक केस बनता और शायद मैं ये केस लेता भी ना। लेकिन केस ये नहीं बना। केस ये बना है कि हाँ, उन्होंने जायज़ तरीके से लिया ज़रूर है, जो घड़ी है और जो ज्वेलरी है वो कानून के मुताबिक ली है, पैसे भी उसके दिए हैं, चलान भी उसका जमा कराया है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर भी किया है, लेकिन उन्होंने ये बेची क्यों? अच्छा। तो बेचना या ना बेचना, ये मेरी नज़र में ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 की। ये आप इसको ये कह सकते हैं कि शायद नहीं करना चाहिए था, इमोरल है, या इस किस्म की आप बात ज़रूर कर सकते हैं। वो दोनों तरफ उसकी राय हो सकती है, लेकिन मेरी नज़र में एक बार कोई शख्स खरीद ले कोई चीज़, उसके पैसे दे दे, तो फिर उसको बाहर फेंके या बेचे या इस्तेमाल करे, वो उसकी मर्जी होती है। आपने भी सेकेंड हैंड कारें ज़रूर बेची होंगी, अगर बेची हैं या कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेची है, तो जो बेचने वाला है या ख़रीदने वाला है वो उसको बेच सकता है और बेचने वाला उसको रोक नहीं सकता। तो यही सिचुएशन है तोशाखाना वाले केस में। फॉरेन फंडिंग वाला केस आपने जिक्र किया, तो हामिद मीर साहब मैं बताऊं, फॉरेन फंडिंग का केस भी एक अजीबो गरीब केस है, क्योंकि उसमें हमने पीटीआई ने तो सारे अपने फंड्स की डिटेल्स दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप सबका फैसला इकट्ठे करें, पीएमएलएन भी देखें, पीपल्स पार्टी को भी देखें, उनकी फंडिंग की क्या पोजीशन है, क्या उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर किया है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है या नहीं। वो कार्रवाई हो नहीं रही, तो उससे मुझे शक होता है। हालांकि मैं एक ऐसा मेरी जो तरबियत है हामिद साहब, वो ऐसी है कि मैं इंस्टीट्यूशन में यकीन रखता हूं और उसकी आज़ादाना कार्रवाई में भी यकीन रखता हूं और उसकी इम्पार्शियलिटी में भी यकीन रखता हूं। ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले में जिस तरह उन्होंने ये फॉरेन फंडिंग का केस और बिलखुसूस ये तोशाखाना वाला केस फैसला किया, और उसके बाद फिर एक और नोटिस दे दिया आज खुद कि पार्टी हेड से रिमूव कर देंगे, तो ये जब मैं कार्रवाई देखता हूं तो मुझे शक होता है कि शायद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्पार्शियल ना रहे। ठीक है। तो ये जो इम्प्रेशन है ये जरूर दूर होना चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई कानून और आइन के मुताबिक करेगा। आप ये देखें, केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस जो दिया है खान साहब को कि पार्टी हेड से रिमूव करें, वो उस केस को आप देखें कि हाई कोर्ट में मैंने फाइल किया था और हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि ये किस कानून के मुताबिक आज खुद नोटिस ले रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कुछ नहीं आया उनके पास। अब ये बताइए कि अगर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर क्या होगा? आइन क्या कहता है, क्या होगा फिर? ये देखें, ये भी केस आप देखें, जो कल केस एक उसकी समाअत होनी है फुल बेंच के सामने, गवर्नर साहब ने फैसला किया कि आर्टिकल 60 उन्होंने कहा कि जो मेरे मुताबिक मैं सेटिस्फाइड हूँ कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने वोट लूज कर लिया है कॉन्फिडेंस असेंबली का, इसलिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और उसमें जो वजूहात दी वो इतनी अजीबो गरीब कि चौधरी शुजात साहब के साथ उनका झगड़ा है, उनका पीटीआई के साथ अखबार में पढ़ा है मैंने कि पीटीआई और पीएमएलक्यू जो है वो इकट्ठे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। वो नोटिस दे दिया स्पीकर असेंबली के पास। जब वो नोटिस आया, उन्होंने उस नोटिस को कह दिया कि ये नोटिस आपका जायज नहीं है जी, और उन्होंने असेंबली का सेशन कॉल ही नहीं किया जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर ले सकें। लेकिन गवर्नर साहब ने फिर ये ऑर्डर फरमा दिया कि जनाब, चूंकि उन्होंने
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, इसलिए ये रूल के तहत वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। ठीक है। सवाल पैदा ये होता है कि झगड़ा स्पीकर साहब और गवर्नर साहब के दरमियान है, स्पीकर ने सेशन कॉल नहीं किया तो चीफ मिनिस्टर साहब किस तरह वोट ले लेते? चीफ मिनिस्टर असेंबली को कंट्रोल तो नहीं करते जी। ये मामला जब हाई कोर्ट में गया तो ये एक रिकॉर्ड है तारीख का कि 24 घंटे से अंदर अंदर हाई कोर्ट ने शाम को 6:30 बजे वो ऑर्डर जो था चीफ मिनिस्टर का, चीफ सेक्रेटरी का, जो गवर्नर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने डी नोटिफाई किया था, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो इसमें तो आपका भी एक रिकॉर्ड कायम होता जा रहा है कि आप इतने ज़्यादा केस मुसलसल आप जीतते जा रहे हैं, तो आपकी जहानत को भी दाद देनी चाहिए। लेकिन ये बताएं ना कि पीटीआई ने तो ऐलान किया था कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन अब पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, इसकी क्या वजह है? जी देखिए, मेरी नज़र में ये एक सियासी कंसिडरेशन है, और जो पीएमएलक्यू का जो एक मौक़िफ़ था वो ये था कि सबसे पहले तो हम ये फैसला कराएं अदालत से कि ये जो रिमूवल था या जो हटाया गया था चीफ मिनिस्टर को, ये दुरुस्त था कि नहीं। पहले जब उसका फैसला होगा और वो गवर्नर का जो ऑर्डर है वो सेट असाइड होगा, उसके बाद ये फिर फैसला किया जाए कि ये रेजोल्यूशन का जवाब बनता है पॉलिटिकली, सियासी तौर पे कि नहीं। तो ये एक कंसिडर, वो पहला जो इशू है कि गवर्नर का ऑर्डर दुरुस्त है कि नहीं, वो एक कानूनी फैसला है। ये जो दूसरा इशू है कि अगर एक बार रिस्टोर हो जाए तो ये डिसॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर डिबेट है, उस पर वो एक सियासी फैसला है। और देखना ये है कि क्या वो इस सियासी माहौल में, इस सिचुएशन में जहां इलेक्शन आने भी वाले हैं, क्या ये रेजोल्यूशन होनी है या नहीं होनी, और उसका फैसला इस अदालत के फैसले के बाद होगा। इसीलिए ये फैसला किया गया कि 11 तक का हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने इलेक्शन का जिक्र किया, तो आजकल बहुत से लोग जो हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, तो उसकी वजह से एक फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर करके तो 2023 में इलेक्शन जो है उसको मज़ीद साल या 6 महीने के लिए मुलतवी किया जा सकता है। तो क्या ये आइन में इसकी गुंजाइश है, साल 6 महीने के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है? जी हाँ मीर साहब, मैंने जायज़ा लिया है इस सवाल का, मैंने सारा आइन दोबारा से भी पढ़ा, उस पर जजमेंट भी पढ़ी। मेरी नज़र में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, 0% गुंजाइश है कि इलेक्शन को सस्पेंड कर दिया जाए या उनको डिले कर दिया जाए किसी भी वजह से। हाँ, अगर एक आइनी तरमीम की जाए, आइन में तरमीम की जाए जो जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज की, सेनेट की भी और नेशनल असेंबली की भी, तब तो आप शायद कह सकें कि एक ऐसी गुंजाइश पैदा की जा सकती है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग आइन है, जो इस वक्त आइन की शक्ल है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। मैंने इसके ऊपर और भी गौर किया, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस बाहर से भी लेके आए और इसको बहुत आप स्ट्रेच भी कर दें, तो फिर भी एक ही कंडीशन हो सकती है कि खुदा न खास्ता कोई जंग हो जाए या खुदा न खास्ता टेररिज्म इस तरह बढ़ जाए कि कोई मशीनरी चल ही नहीं सकती, हुकूमत चल ही नहीं सकती किसी किस्म की, नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। और उस सिचुएशन में शायद आप इलेक्शन को मुलतवी कर सकें, लेकिन वो बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। खुदा न खास्ता ऐसी गुंजाइश आइन में जिक्र तो नहीं किया जाता, लेकिन गुंजाइश पैदा की जा सकती है अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे कोई हकायक हों। उसके अलावा सिंपली ये कह देना कि जी इकनॉमिक पोजीशन हमारी बड़ी ख़राब है इसलिए हम इलेक्शन को डिले करें, उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। अगर ऐसा हुआ खुदा न खास्ता, तो फिर वो गैर आइनी हरकत ही होगी, वो फिर किसी, उसको आप एक मार्शल लॉ के तहत आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो मार्शल लॉ की तो गुंजाइश ख़त्म नहीं हो चुकी? जो 18वीं तरमीम के ज़रिए जो आर्टिकल 6 में भी कुछ नई चीज़ें शामिल की गई हैं, तो पाकिस्तान की कोई अदालत किसी भी किस्म के जो गैर आइनी इकदाम को इंक्लूडिंग मार्शल लॉ को इंडोर्स नहीं कर सकती। तो ये जो मार्शल लॉ वाली बात भी है, ये भी अब आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है? जी बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा कि वो कोई ऐसी बात हम इस आइन के तहत तो सोच भी नहीं सकते। आपको तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो अमेंडमेंट्स आ गई थी कि अब तो आइन को आप सस्पेंड भी नहीं कर सकते, होल्ड इन अबेयंस भी नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो वो एक हाई ट्रीजन हो जाएगी। अब उस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार
अपनी फैसलों में भी ये कह दिया है। इसलिए इस किस्म का अगर इकदाम हुआ कि इलेक्शन को कोई डिले करने की कोशिश करेगा, तो मुझे यकीन है कि हमारी अदालतें भी उस इकदाम को फौरन कलअदम करार दे देंगी। जिस तरह आपने ये देखा, गवर्नर का ऑर्डर 16 घंटे के अंदर अंदर उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह मेरा ख्याल है वो वाला ऑर्डर तो घंटे के अंदर ही सस्पेंड हो जाएगा। तो अली ज़फ़र साहब, ये जो कुछ लोगों ने एक तजवीज़ पेश की है कि जी पाकिस्तान में एक तवील मुद्दत की गैर सियासी निगरान हुकूमत 1.5-2 साल के लिए आए और IMF की शराइत पर अमल दरामद करे, तो ऐसी तवील मुद्दत की गैर सियासी निगरान हुकूमत जो है वो भी अगर 3 महीने से ज़्यादा के अरसे के लिए लाई जाती है, तो ये भी आईने पाकिस्तान के साथ बगावत के ज़ुमरे में नहीं आता? जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी गुंजाइश नहीं है हमारे आइन में। कोई किसी किस्म का कोई प्रोविजन नहीं जो कि ऐसी एक हुकूमत आ जाए जो कि इलेक्टेड ना हो और वो निगरान तौर पे 3 महीने से ज़्यादा अपना अरसा गुजार ले। इसलिए वो भी एक गैर आइनी इकदाम होगा और वो फिर आर्टिकल 6 के तहत ही आएगा। आप ये देखिए कि मेरी नज़र में अगर आपने हार्ड डिसीजंस लेनी है, सख्त फैसले करने हैं, इकोनॉमिक फैसले, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है वैसे भी कि पब्लिक सपोर्ट हो, कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके साथ पब्लिक सपोर्ट हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप इलेक्शन कराएं, आप एक हुकूमत ऐसी लेके आएं जिसके पास पब्लिक सपोर्ट हो, वो फिर मुश्किल फैसले करे, क्योंकि वो वाले मुश्किल फैसले जो हैं वो अवाम भी शायद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उन्होंने अपने एक एतमाद के अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए एक हुकूमत लेके आए हैं। तो इसलिए वो वाली हुकूमत पे सख्त फैसले कर सकती है। निगरान हुकूमत वैसे ही गैर आइनी है, वो वैसे भी आर्टिकल 6 के खिलाफ होगा और वो इन एनी केस उसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो वो आगे काम कर भी नहीं सकेगी, ना उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी, ना उसको अदालतें मानेंगी। तो ये सारा ये बात करने में तो बड़ी अच्छी चीज लगती है, लेकिन उसका कोई आइन कानून और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक और भी मुझे आपसे एक कानूनी राय लेनी है एक मामले पे। आपको पता ही होगा कि जो वज़ीराबाद में जो इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला हुआ था, तो उसके मुल्ज़म का एक पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है। तो अब जो मुल्ज़म के जो वकला हैं उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है जिसको कि अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और उस दरख्वास्त में कहा गया जी कि इमरान खान साहब का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। क्या इमरान खान साहब को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पे कानून की मदद से मजबूर किया जा सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो कानून का मुझे इस मामले में इल्म है वो ये है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो अक्यूज्ड का तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं होती। यानी कि उसको आप हतमी उसको आप साबित किसी के खिलाफ या किसी के हक में साबित नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक होती है। इसीलिए कंप्लेनेंट को पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जाता, या जो जख्मी हो, जिसने कंप्लेन किया हो, जिसने इल्ज़ाम लगाया हो, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जाता। उसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू भी नहीं होती, उसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ट्रायल में, ना इन्वेस्टिगेशन में। तो इसलिए ये एक टैक्टिक तो शायद उनके वकील ने एक तरह से शोशा छोड़ा है जो डिबेटेबल डिबेट में आ गया है, लेकिन उसकी कोई कानून में मुझे उसकी कोई गुंजाइश नहीं नजर आती, ना उसका कोई फायदा या नुकसान नजर आता है। एक और भी चीज़ ये बताइए कि आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद मरतबा ये कहा है कि उन्हें अपने पे होने वाले हमले की साजिश का पहले से इल्म था और जो एजेंसियों में मौजूद लोग हैं उन्होंने उनको ये इतला दी थी। तो क्या इमरान खान साहब से कोई अदालत ये पूछ सकती है कि ये जो आपका दावा है, तो इस दावे की रोशनी में ही आप हमारी मदद करें और बताएं कि ये आपको साजिश के बारे में इतला किसने दी थी? जी बिल्कुल, देखें, जब एक केस एक अक्यूज्ड हो, एक किसी के खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम या कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया जाए, तो वो उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसने एविडेंस तो देना होता है, उसको शहादत तो देनी है, और उस शहादत में उससे पूछा भी जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे भी पूछा जा सकता है मेरी नज़र में, और जब ट्रायल होता है तब भी पूछा जा सकता है कि हकायक क्या हैं, और अगर उनके पास कोई शहादत है, कोई एविडेंस है, कोई बयान देना चाहते हैं, तो वो ज़रूर
उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये मेरा जवाब यही होगा आपके सवाल का कि बिल्कुल इसकी गुंजाइश है और इन्वेस्टिगेशन की मदद के लिए उनकी बयान दिया जा सकता है। तो आप इमरान खान साहब को क्या एक लीगल एडवाइस क्या करेंगे कि उनको इस मामले में किसी का नाम बता देना चाहिए? जी देखिए, यहाँ जहाँ तक उनका ये केस है, इस केस को मैं हैंडल नहीं कर रहा। उनकी जो लीगल टीम है वो ज़रूर उनको इस पे एडवाइस करेगी, जो भी कानून के मुताबिक जो भी बेहतर हो, क्योंकि इसमें अल्टीमेट एम हम सब का यही होना चाहिए कि जो केस के हकायक हैं वो सामने आए। आपको खुद गुजर चुके हैं बहुत सारे केसेस से भी, और बड़े मेजर इश्यूज आपने सामने आपके दरपेश आए हैं, और हमेशा यही आपका असूल भी रहा है और मैं भी उसी असूल पे यकीन रखता हूँ कि हकायक तक पहुँचना ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा इशू है जो कि पब्लिक को भी पता होना चाहिए। अपने एक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट है उनका तो हक है ही, लेकिन ये चूंकि एक ब्रॉडर इशू है, ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक इशू है, इसलिए इसके हकायक तक पहुंचना मेरा ख्याल है पब्लिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। और ये एक मेरा ख्याल है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की जो बुनियादी हक है, हम सब का हक है कि हम पता करें कि एक्चुअल हकायक क्या थे और उस तक पहुँचें, और अदालतें ही इसमें मदद कर सकती हैं अल्टीमेटली किसी ना किसी फैसले तक पहुँचने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब हमसे बात कर रहे थे, कुछ अहम आइनी मामलात पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान को जिन इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, तो उनकी रोशनी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में हम किसी सियासतदान से, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद एक इंतहाई अहम मगरबी सफारतकार से बात करेंगे। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर। Thank you very much. And I remember that when you arrived in Pakistan, your first interview was with us. Pele Vakt was right here with you on Capital Talk. Raja ji sabse pehle hamare saath aaye. Raja ji was here. So I would like to show the clip of your first interview with us. Is there any chance of the UK cricket team visiting Pakistan? Mujhe umeed hai. मुझे उम्मीद है। I really hope that we can see this happen. I hope that when the British cricket team will visit Pakistan, we will invite you to our show, and we will have the whole conversation in Urdu. That would be my pleasure. You're making me nervous again. No. So, do you remember your promise? I do remember my promise, Hamid. I'd just like to say before you go any further, I am very grateful. I mean, Pakistan is famous for its hospitality. It's very kind of you to have let the England boys win every match. I thought it was very generous of you, very nice of you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो चलें, let's go. आगे चलें। Very good. So now you are going back from Pakistan, and we will definitely miss you. So tell us about your stay in Pakistan. How was that? Well, it's right, Hamid, that you've started with the cricket, because the cricket is cricket. Everyone loves cricket, and I think I said in that first interview, it's in our blood. Hamare hoon mein hai. But it represents so much more. And every day in my job here, it has come back to one thing, and that is the relationship between the two countries. Because you know how I've said, hum ek saath hain, UK Pak dosti hain. पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत है. It's big, it's ahem, it's important, and it's those people-to-people ties. Everyone I meet says, "Oh, London, it's like my second home. Oh, my friends there, my cousins there, the time I spent there." And for me, actually, as ambassador, it's been a privilege to do this job, because you are protecting that relationship, you're curating it. And there are very, very few countries in the world that have that depth of understanding of each other. It doesn't mean we always agree. My job is not to be a cheerleader for Pakistan, it's to advance British interests. But it's meant that I've always had that sense of a deep connection between our two countries. And that's what I will take away with me. So you recently summarized your stay in Pakistan by narrating your thoughts from A to Z. And you wrote, "As I prepare to leave, I will tweet alphabetically for 26 days to highlight the best of my experiences and work in this
Khoobsurat country. And A is for airlines. Yes. Why? Because those people-to-people links don't work unless people can fly. And we got British Airways cemented in their schedule here, flying to Lahore and Islamabad, Virgin Atlantic, another airline coming here for the first time. And that then allows the people to travel, the tourists, the trade, the cricketers to travel. Everybody benefits when those air links are strong. That's why it was such an important development. And B is for the business. Business. So I think you want a British High Commissioner not sitting here talking about Afghanistan, about security, important that those issues are. The big story in this town, in this country, and across the world at the minute is the economy, economic growth. Our part in that should be bringing jobs, bringing investment, bringing that economic growth. And if I may, as I leave Pakistan, one of the things I would most like to see is more consensus around the hard and difficult steps needed for economic reform. This is too important to leave to different sides to play politics with. The economy is absolutely vital, and for our part as friends and partners, bringing business investment should be a key part of what you expect me to do. And there was a donors conference in Geneva. Yes. Yesterday you also made some tweets. So what do you see the future of Pakistan? Well, look, the floods this year have been extraordinarily difficult, and you know, most of these things in my A to Z I was talking about, these are rich, warm, happy memories. But we've had some difficult times as well. The coronavirus pandemic, yes, the takeover of the Taliban in Afghanistan. But the floods this year have been absolutely devastating, and there is no doubt that Pakistan is on the front line of the world climate emergency. And the money which the world community pledged in Geneva is incredibly important to help Pakistan rebuild. For the UK, it was £36 million we've now pledged to the immediate recovery, and £91 million overall, as well as money direct from the British people to help with climate change. That is what we have got to do if countries like Pakistan are to adapt and be resilient to these extreme weather events. Even in London last year, Hamid, we had a temperature of 43 degrees in London. We can't cope with that any more than you can be expected to cope with the rainfall and the floods last year. So it's a tough challenge. So the climate change is an international phenomenon. Yeah, and you know, when I first arrived here and I talked about climate change, very few people were interested. Now we all know this is a vital issue. The glaciers that are melting in the north, the flood water on which agriculture normally depends, if those waters go away and we just have these extreme floods, it's devastating for the people of Pakistan. And you wrote C is for cricket. Well, of course. The thing I am happiest about in my time here was that commitment, which you are responsible for, sir, because you forced me live on air, I think, to say that I would bring cricket back. And we then had a difficult period. We built towards a tour. It nearly happened. It got cancelled. And to be present this autumn at the return of England cricket, I was How did deeply you excited. convince your security guys to allow cricket team to come Pakistan? So look, it's called diplomacy, and I think at heart there is something else that runs through my experience. There are lots of negative perceptions of Pakistan, but those perceptions don't always match reality. The security situation in this country now is very different to 5, let alone 10 years ago. And part of my job was to explain that, work with the PCB, enormous credit to the PCB, under Ehsan Mani, then Ramiz Raja, to the ECB, to show we could put a proper tour on, and it was a real team effort. And D is for diaspora. Diaspora. So that's the word we use for the Pakistanis in the UK. 1.6 million people in the UK and Britain trace their heritage back to Pakistan. Over 100,000 British nationals here in Pakistan, maybe 400,000 travelling back and forth. It's a deep bond. And E is for education. Education, the issue we don't talk about enough. Yes. Because you think about the demographic, what, 50–60% of the country is beneath 30, even more, 75% under 18. Those kids are the country's future. And in your tenure, record numbers of visas were issued to the students. Yes, so I want to see more and more students coming back and forth, and student visas are being granted at the rate of about 97%. So if you want to study in the UK, please apply. And we have discussed F is for the floods. For the floods, difficult floods. And G is for gender. G is for gender.
So even the biggest fan and supporter of Pakistan cannot but admit that the gender record is less than it should be. No country can achieve its potential without 50% of its population. As Quaid-e-Azam said, we must empower our women and give them the strength that they deserve, and show many amazing female Pakistani role models that I have worked with. So no apology for talking about strong Pakistani women and the need for them to have a central role in our public and economic life. And H is for heritage. Heritage. So I am a historian, and the history of this country, diverse history, I have loved visiting, and places like Rohtas Fort, Mackley, the World Heritage sites, they need protecting and promoting. And we are still using the old British colonial laws. Even the sedition case is, sedition law is changed in British, but we are still using that. You know, if there's any problems in the end, it's our fault. So I will skip to J. J is for Jinnah. J is for Jinnah because I think his founding vision was so striking. I mean, he is such a character in the country. His mausoleum, one of the first places I visited in Karachi, and reading again some of his writings, there's a lot of wisdom and things we should follow in what Quaid-e-Azam said. And K is for Khana. So what is your favorite Khana in Pakistan? So now I have a confession. If there is a fight between England and Pakistan on savoury food, Pakistan wins. On puddings, on dessert, English food I think is better. Okay. But I love anything with dal, anything with saag, and I will take that home with me. I'll be looking for that nice desi food across England wherever I can find it. Yeah. And why you wrote that L is for the libraries? So this is about the British Council. So a very important part of our work here is the British Council, who do a lot of the education, the exams, those student links you talk about, and they have these libraries in Lahore and Karachi, which still provide a wonderful place for anyone of all ages to come and learn and to read and to meet each other. And you wrote M is for the Margla Hills. So one of the best things about living in Islamabad is your access to the Margla Hills, and you will know that I go walking there. I have been many times early in the morning, at weekends. Some ambassadors, they go and play golf. I don't want to play golf. But walking in the Margla Hills... You don't play golf? I don't play golf. Sorry to confess. Okay. But walking in the hills, I'm a trekking high commissioner, so very happy doing that. So now I will take a short break and we will come back. Welcome back, and today we have with us Dr. Christian Turner, the High Commissioner of UK in Pakistan, but he is Pakistan's High Commissioner in UK also. Am I right? This is true. Yes, Oche. Why people say that you are Pakistan's ambassador in UK? Well, this is dangerous because it might mean that I get sacked for not doing my job. As I said a moment ago, my job is not to be a cheerleader, but if I see things in those perceptions that are wrong, I think it is my job to call it out. Yeah. And it's because of those people ties we've been talking about, the diaspora, that it's as easy to do my job in Manchester and Bradford and Leeds as it is here. And I do feel strongly that that need to be an advocate. I've said publicly that although this week I will stop being an ambassador to Pakistan, I will become an ambassador for Pakistan. I'm going back to a job at HQ in London. Wherever I am in the world, I will be watching, following, and keeping in touch with my friends here. And that's why you try to sensitize Pakistanis on certain important issues, like you wrote, P is for population. Population. So a bit like the education, the girls' education, it's one of those things where if we don't address it, it's so foundational. The population is growing fast, so I think no apologies for talking about family planning, about contraception, about population growth, because with 220 million people, if that doubles by the middle of the century, the pressures on the country will be even greater. And Q is for Qawwali. You like Qawwali? You know, Qawwali, it is very distinct. So if you're here and you're getting to know Pakistani music, I had an evening with Rafa Fateh Ali Khan, amazing performer, lots of music in Can in you UK. sing some Qawwali? Absolutely not. Absolutely No, not. I've already danced Absolutely on, not. I've already danced on TV for cricket. Okay. Singing would be a step too far. But I also needed a cue, and it was the only cue I could think of. So. Okay. And R is for rubbish. So this is an interesting one. I picked up this rubbish in the Margla Hills, and it was quite spontaneous. It wasn't planned. Your country is bahut khubsurat. The landscapes, the hills, the rivers,
And when you go to these places and you see plastic bottles, leftover lunches thrown away, it really saddens me. A small effort by everybody, and you can keep the country हाई clean. कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि तफरीही मुकामात और ख़ास तौर पे मार्गला हिल में जब आप सैर करने के लिए जाते हैं तो बराए करम वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट ना फैलाया करें प्लीज़, ये गंदी हरकत है, ये काम मत किया करें. एंड वाई एस इज़ फॉर स्कीइंग इन द स्वात. So this was an extraordinary experience, and the mountains, I love the mountains, and the mountains, the north as well. There's more ice in Pakistan than anywhere else in the world outside the polar regions. And very early in my time, I got to go to the beautiful Swat Valley, to Malam Jabba, where I did some skiing, and it was a wonderful experience. And I will jump to Z. Z is Zindabad. Pakistan, UK, Dosti, Zindabad. Okay, so that is your conclusion. That is my conclusion. I think our relationship is if you like, non-discretionary. And like good friends, we must listen to one another, talk to one another. I'm not saying these are easy times. They're not an easy time in geopolitics. For all this positive stuff we've talked about, as I say, there have been some real challenges I've worked on in my time here. And that is where countries need to reach out and talk to one another, not move away and go to the edges. It's why diplomacy, I think, still is very important. And I can say very honestly, and I hope you and your viewers can see it, that I will take Pakistan mera dil mein hai. It will be in my heart as I go, and it'll be a long, long time before I'm not feeling sad about leaving Pakistan behind. And your last message for the common Pakistanis, you stayed here for 3 years. What is your best memory you can share with the common Pakistanis? So I think if there is one memory, it will be the national anthems being played at the start of the first test match in Rawalpindi. Because it was a coming together. And as a diplomat, I'm a builder of bridges, not of walls. And as I'm alluding, in British politics, in Pakistani politics, there are too many people moving away from each other. And I think we must remember the art of disagreeing well. We have disagreements with many people, with some of our closest friends and loved ones, but we do it with respect. And for all the difficulty of getting those test matches and cricket returning, the cricket represented so much more about that dosti. And that moment and all the work we had done with the two boards, when I stood in Rawalpindi after 17 years and heard our national anthem, God Save the King, of course, as it now is, and your national anthem, and saw the two teams there with Ben Stokes and Babar Azam, there was a tear in my eye. Thank you very much, and best of luck for your future, and hope to see you again in Pakistan. बहुत शुक्रिया. I will not say खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. सिर्फ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा, सिर्फ फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. बहुत शुक्रिया. फिर मिलेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. हाफिज.